Welcome to CVR English Inside News. This is Pravalika. Let's get into the details. Ahead of the oath-taking ceremony in Patna, Bihar, Chief Minister Rekha Gupta remarked that the occasion symbolized a victory of the people's trust, the government's collective efforts and Bihar's overall development. She emphasized that the event was not just about Nitish Kumar assuming office for the 10th time, but also about reaffirming the confidence of citizens in the leadership and governance of the state. Observers noted that her statement highlighted the importance of unity and progress, portraying the ceremony as the milestone in Bihar's political journey. It was further indicated that Gupta's words reflected optimism about the future, stressing that government's initiatives were aligned with the aspirations of the people. सरकार के प्रयास की जीत है और बिहार में विकास की जीत है। ये जनता के विश्वास की जीत है, सरकार के प्रयास की जीत है और बिहार में विकास की जीत है। ये जनता के विश्वास की जीत है, सरकार के प्रयास की जीत है और बिहार में विकास की जीत है। ये जनता के विश्वास की जीत है, सरकार के प्रयास की जीत है और बिहार में विकास की जीत है। ये जनता के In Delhi, the Supreme Court ruled that no fixed timelines can be imposed on the governor or the president for the granting assent to the bills passed by the state assemblies. The court also clarified that the judiciary cannot grant deemed assents in such cases. Advocate Barun Sinha explained that court has concluded the governance power of Article 200 and 201 of the Constitution and discretionary, meaning that governor is not bound by the advice of the Council of Ministers when deciding on a bill. The verdict underscores the constitutional autonomy of the governor and president in legislative processes, reaffirming their discretionary authority in matter of assent. Supreme Court Constitution Bench headed by Honorable Chief Justice of India has given its opinion under Article 143 of the Constitution of India on the presidential reference. And today's opinion given by a Constitution Bench of the Supreme Court is a very balanced under the Constitution of India and the powers of the Honorable Governor and the President under Article 200 and 201 has been well defined by the Supreme Court, and finally the Honorable Supreme Court has concluded that the power under Article 200 and 201 of the Constitution of India is a discretionary power and the Governor is not bound by the advice of the Council of Ministers in the matter of taking decision on a bill. Similarly, the Honorable Supreme Court has also opined that the courts cannot interfere in a decision-making process of the governor while considering a bill. Therefore, the Honorable Supreme Court had said that the interference, the power of the governor and the president in the constitution while considering a bill is not justiciable. They have further opined that the limited jurisdiction can be exercised by the Supreme Court or the High Court by granting mandamus only when a situation arises that the governor is not acting or discharging its constitutional duty as prescribed under Article 200 and 201. Therefore, to exercise the power, the limited direction of mandamus can be issued, but no discussion on merits of the bill or merits of the matter. So the Supreme Court's opinion is very clear today, and they have said that the governor has got powers, three powers, either to assent the bill or to reserve the bill or to withhold the bill and send it back to the legislature for reconsideration. Thereafter, this can be given assent by the governor. But the justiciable factor, because we have seen in the state of Tamil Nadu, this court had given direction to the governor and the president to give consent, otherwise the bill will.
In Bengaluru, Karnataka, Home Minister G. Parameshwara said police have gathered crucial information in the ATM cash theft case. He noted that investigators are probing whether the accused are from Telangana or another state. According to him, the robbers had replaced the vehicle's nameplate, exchanged vehicles, and transferred the stolen money to evade detection. Parameshwara added that while the police have certain leads, more proof is required, but assured that the culprits will be tracked down the arrested soon. His statement reflects the state government's determination to resolve the case and bring those responsible to justice. ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನವರ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ, ಅವ್ರು ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿಯ Punjab Minister Sanjeev Arora, while speaking in Chandigarh, remarked that news should not be highlighted often receives more attention, while positive developments get less coverage and negative reports dominate. He pointed out that investors have conveyed to him that Punjab's law and order situation is better compared to many other states. Arora acknowledged that improvements are still required and emphasized that the police treat such matters seriously and that action is being taken to address them. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਮਿਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ IT ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, 2 ਬਰਨਾਲੇ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਬੁੱਧਨੀ ਹੈਗੀ, ਬੁੱਧਨੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ। In Kanpur, Uttar Pradesh, 4 deaths were reported under suspicious circumstances, with initial investigations pointing towards the coal burning as the cause. Officials stated that the incident occurred in an oil seed mill at the Panki industrial area, which was not fully operational. It was mentioned that 7 people were present at the site, and while 3 are stepped outside. 4 boys carried a tray of burning coal inside after their meal and locked the door. Police Commissioner Sukhveer Lal indicated that further legal action was being taken and added that owners and industry representatives had been requested to extend support to the victims' families
A forensic team is investigating the matter to determine exact causes. पनकी इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में ये यहाँ पर ऑयल सीड मिल है। इसमें काम चल रहा था, अभी चालू नहीं थे और इसमें 7 लोग थे पहले, तो 7 में से 3 लोग बाहर हो गए थे। 4 लड़के जिन्होंने खाना खाने के बाद एक बारात में ऑयल कोयला को लेके गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वेंटिलेशन का कोई था नहीं उसमें और वो लड़के सो गए, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई है और ग्रेजुअली उन्होंने इनहेल कर दिया और उनको पता भी नहीं चला। तो सुबह जो है इन्हीं के साथियों ने जब दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करी तो दरवाजा बंद था अंदर से। तो उसके बाद जब देखा गया तो चारों के चारों लड़के मृत अवस्था में पाए गए हैं। इनकी फोरेंसिक वगैरह पूरी जांच कर दी गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो इनके मालिकान हैं और इंडस्ट्री वालों से भी हमने अनुरोध किया है कि इनके परिवारों को थोड़ा बहुत। In Chennai, Tamil Nadu, the AIADMK stated that a massive protest led by former Minister Rekha Kumar. It was said that the party accused ruling DMK of irregularities in the special intense revision process. Leaders indicated that the protest was organized to highlight alleged violations and demand transparency in electoral procedures. Party representatives mentioned that the SAR process should ensure fairness but claimed that DMK had manipulated it to gain advantage. Observers noted that the demonstration drew significant crowds, reflecting growing political tensions in the state. It was further stated that AIADMK leaders vowed to continue their agitation until corrective measures were taken and accountability was established. In MAU, Uttar Pradesh, 3 women lost their lives and 7 others sustained injuries after a government bus collided with an e-rickshaw in the Shaipokra. Officials stated that 3 passengers from the e-rickshaw died instantly, while several others, including children, were seriously hurt. It was mentioned that the injured were being treated at the local hospital, and authorities indicated that those requiring advanced care would be referred to higher medical facilities. District Magistrate Praveen Mishra emphasized that proper medication attention was being provided to all victims. He added that the administration was closely monitoring the situation and ensuring necessary support for the families affected by the tragic accident. जैसा आप लोग अवगत हैं कि शीतला माता मंदिर के पास बस और ई रिक्शा में एक्सीडेंट होने के कारण 3 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है और कुछ लोग घायल हैं, जिसमें बच्चों की सिटी स्कैनिंग हो रही है। 2 बच्चों की सिटी स्कैनिंग की रिपोर्ट प्रकाश के एक हमने देख भी लिया है और 2 बच्चों की और आनी है। उसके अनुसार हम लोग अगर रेफर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक की जरूरत पड़ती है, उनको हम रेफर भी करवा रहे हैं और बाकी लोगों का जैसा कि यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि जिला अस्पताल में ही उनका इलाज हो जाएगा और उनको लोग की अभी क्रिटिकलिटी जैसी स्थिति नहीं। बच्चे हमारे पास 4 हैं, बाकी बड़े हैं, उनका यहाँ इलाज हो जाएगा, उनकी क्रिटिकलिटी की पोजीशन नहीं है। जो क्रिटिकल कंडीशन लग रही है, जिनका बता रहे हैं कि सिटी स्कैनिंग के बाद और ज्यादा सीवियरिटी है कि नहीं, ये मालूम चलेगा। उनकी संख्या 4 है। वो देवरिया के रहने वाले थे। जैसा आप लोग अवगत हैं कि शीतला माता मंदिर के पास Union Minister of State for Textiles Pavitra Margarita attended the Technical Textile Export Awards for 2023 to 24 and 2024 to 25 organized by Martexcel in Mumbai. Addressing the gathering, Margarita expressed his honor in participating and highlighted Martexcel's role as the apex forum for stakeholders in the technical textiles sector. He emphasized the importance of technical textiles in driving innovation, boosting exports and strengthening India's position in the global textile market. The awards recognized outstanding contributions by industry leaders and exporters, underscoring the government's commitment to supporting this high-growth sector. Margarita reaffirmed his close association with Martexcel and praised its efforts in promoting excellence and collaboration across the industry. Today, Martexcel, that is Man-Made and Technical Textiles Export Promotion Council, organized the
Technical Textile Export Award for 23-24 and 24-25. So I had the honor and privilege to attend this great event organized by Metexil here in Bombay. So this forum, Metexil, is considered to be the apex forum of all the stakeholders of technical textiles, and I'm closely related. They have immense contribution for encouraging, empowering, and connecting our local producers and textile industry partners with global stakeholders and counterparts. So they have been working for the last a decade and more. So really, I came here and met with all the stakeholders, innovators, industry players, exporters here in the same platform. And this special award-giving ceremony is very important because it has been playing a key role in empowering, encouraging, and discovering right from new talents to the established business houses in the field of technical textiles. So all of us know that now our man-made fiber is dominating the entire textile industry, amounting 70 to 75% of total textiles of fiber, and our export in man-made fiber is 6.5%. And I'm so proud to say in the this from this forum of Metexil that our export in technical textile has grown by 15%. So I'm so proud to see that everybody, all the stakeholders are appreciating my Prime Minister, our Prime Minister, Honorable Pradhan Mantri Narendra Modi ji, for his constant hand-holding and support for expanding the industry since 2014, and right from earmarking more than 1,400 crore rupees for research and development, for for the overall promotion of technical textile and collaboration with the industry, with the technical and scientific institutions, and to encourage and empower. So right from the earmarking of the budget of 1,400 rupees to rationalization of our GST and all the initiatives taken. Especially today is a very important day for our technical textile and man-made fiber industry, because today just coming here we got the news that additional 17 proposals submitted by our technical textile and man-made fiber industry amounting rupees 2,610 plus. Today Metexil, that is man-made and technical textile. In Birbhum, West Bengal, Postal Superintendent Soumya Chatterjee announced that Aadhaar enrollment and correction for children has commenced in full swing. Following instructions from the central government, he urged families from all sections of society to complete the process through post offices, emphasizing that service will be provided completely free of cost. To ensure wider accessibility, enrollment and correction work will be also carried out in schools and block offices across the district. The initiative aims to streamline Aadhaar services for children, making it easier for parents to update or register details without financial burden. Authorities expect the drive to significantly improve coverage and accuracy of Aadhaar data among younger citizens. আমাদের এই সাংবাদিক বৈঠকের উদ্দেশ্য হলো যে আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে 5 থেকে 15 বছরের যে সকল বাচ্চা বর্তমানে স্কুলে পড়াশোনা করছেন তাদের প্রত্যেকের বায়োমেট্রিক আপডেট সরকারের তরফে এবং ইউআইডিআই এর তরফে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এবং এই নতুন প্রজন্মের জন্য ভারতীয় ডাক বিভাগের তরফে আমরা আগামী এক বছর অর্থাৎ গত 14ই নভেম্বর শিশু দিবস থেকে 2026 সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত 5 থেকে 15 বছরের প্রত্যেকটি বাচ্চার আমরা ফাস্ট এবং ম্যান্ডেটরি যে বায়োমেট্রিক আপডেশন রয়েছে সেই বায়োমেট্রিক আপডেশনের কাজটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই বীরভূম জেলায় আমাদের 23টি আধার সেন্টার রয়েছে। সেই আধার সেন্টারের যে কোনো সেন্টারে অভিভাবকের মাধ্যমে, শিক্ষকের মাধ্যমে, প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে, যারা শিক্ষা বা এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদের মাধ্যমে আমরা এই খবর আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানাতে চাইছি যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আধারে বায়োমেট্রিক আপডেশন 5 থেকে 15 বছরের সকল বাচ্চার আমরা করব পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।
আমরা চাই যে এই খবর যাতে প্রত্যেকটি স্তরে, ব্লকে, স্কুলে, প্রত্যেকটি রুরাল এবং ইন্টেরিয়ার এরিয়াগুলোতেও অভিভাবকের কাছে বাড়ি বাড়ি যাতে এই খবরটা আপনাদের প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে পৌঁছে যাক। এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় আবদার এবং দাবি আপনাদের কাছে, কারণ এটা কিন্তু শিশুর ভবিষ্যতের সাথে যুক্ত, আমার দেশের আগামী প্রজন্মের সাথে যুক্ত, আমার দেশের আগামী ভবিষ্যতের সাথে যুক্ত। আমাদের এই সাংবাদিক বৈঠকের উদ্দেশ্য হলো যে আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে 5 থেকে 15 বছরের যে সকল বাচ্চা বর্তমানে স্কুলে পড়াশোনা করছেন তাদের প্রত্যেকের বায়োমেট্রিক আপডেট সরকারের তরফে এবং ইউআইডিআই এর তরফে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এবং এই নতুন প্রজন্মের জন্য ভারতীয় ডাক বিভাগের তরফে আমরা আগামী 1 বছর অর্থাৎ গত 14ই নভেম্বর শিশু দিবস থেকে 2026 সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত 5 থেকে 15 বছরের প্রত্যেকটি বাচ্চার আমরা ফার্স্ট এবং ম্যান্ডেটরি যে বায়োমেট্রিক আপডেশন রয়েছে সেই বায়োমেট্রিক আপডেশনের কাজটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই বীরভূম জেলায় আমাদের 23টি আধার সেন্টার রয়েছে, সেই আধার সেন্টারের যে কোনো সেন্টারে অভিভাবকের মাধ্যমে শিক্ষকের Union Minister of State Jitendra Singh announced a breakthrough medical trial in Delhi involving bone marrow transplantation through intravenous methods. He explained that this innovation approach allows bone marrow to be transplanted in a way that changes its behavior, enabling the formation of natural human blood types. Singh emphasized that while the trial has shown promising results, it will take time before the procedures are available to common patients. He noted that clinical trials and regulatory approvals could take up to 2 years before widespread application. The development marks a significant step in advanced medical research, offering hope for the improved treatments in hematology and transplant medicine. यहाँ से इंटरवीनियसली बोन मैरो जिसे कहते हैं ट्रांसप्लांट, बोन मैरो में उसको ट्रांसफर करना और उससे बोन मैरो का जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा और जो जिस तरह का खून आप चाहते हैं जैसे सेहतमंद इंसान में होता है वो बनना शुरू हो जाएगा। अब अभी ये ट्रायल यहाँ हुआ है, लेकिन जब तक ये आम पेशेंट तक पहुँचेगा उसमें समय लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल, क्योंकि इसलिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी दरकार रहेंगे। और तीसरा इसका बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे हमें एक स्वतंत्रता दे रखी है पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की, इस वर्ष तो न्यूक्लियर सेक्टर को भी खोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये उसका भी एक बड़ा ही खूबसूरत उसकी मिसाल है। हमारे जितने भी अभी तक इस मंत्रालय में ट्रायल्स हुए हैं, सक्सेस स्टोरी, फर्स्ट ऑफ देयर काइंड, पहली एंटीबायोटिक हिंदुस्तान से नेफिथ्रोमाइसिन, उसमें भी प्राइवेट पार्टनर थे, पहला वैक्सीन हिंदुस्तान, उसमें भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन थी, पहला हमारा हीमोफीलिया ट्रायल हुआ वो भी पार्टिसिपेशन पर, और आज भी ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के साथ। और इससे ये भी होगा कि हम आने वाले समय में, जैसे पहले क्या हुआ करता था, आज से 15-20 साल पहले तो कोई नया आयाम या कोई नया विकल्प दुनिया के सामने आता तो भारत में उसका अनुसरण बाद में किया जाता था। आज वी आर अमंग दी अर्ली इनिशिएटर्स, और ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। जो यहाँ CSIR में हो रहा है वही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में भी हो रहा है, CSIR के एक नहीं अनेकों इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी E3 की जो हमारी पॉलिसी आई है वो भी वी आर अमंग दी फर्स्ट। तो ये सारा एक इकोसिस्टम बना है जिसके फलस्वरूप हम ये सफलताएं प्राप्त करने में। यहाँ से इंटरवीनियसली बोन मैरो जिसे कहते हैं ट्रांसप्लांट, बोन मैरो में उसको ट्रांसफर करना और उससे बोन मैरो का जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा और जो जिस तरह का खून आप चाहते हैं जैसे सेहतमंद इंसान में होता है वो बनना शुरू हो जाएगा। अब अभी ये ट्रायल यहाँ हुआ है, लेकिन जब तक ये आम पेशेंट तक पहुँचेगा उसमें समय लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल, क्योंकि इसलिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी दरकार रहेंगे। और तीसरा इसका बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे हमें In Delhi, Advocate Sriram Parakat explained the Supreme Court's recent opinion on the powers of governor. He stated that after the 5-judge constitution bench's decision, it had become clear that governor could no longer withhold a bill indefinitely. According to him, the earlier practice of keeping a bill pending without time limits was no longer permissible. He mentioned that the governor must either grant assent or return the bill for reconsideration
as the decision is guided by the Council of Ministers. Observers noted that this clarification strengthens legislative processes and ensures accountability. It was further indicated that ruling reinforces constitutional principles by limiting discretionary delays in governance. Is marked by the decision of the Council of Ministers, and it's after consultation that it's sent to the governor. The governor can't be an island of power where he sits down and keeps waiting for a really long time. That is not a constitutionally acceptable scheme, is what the Supreme Court says. But at the same time, the earlier judgment of the two-judge bench headed by Honorable Justice Pardiwala had said that Supreme Court have to give a time limit of 6 months, and if within that 6 months an assent has not been given, it will be deemed to be an assent. The deemed assent thing is considered to be not so correct by the 5-judge bench. The 6 months period given by the court is also considered not so correct by the Supreme Court. So from today onwards, this 5-judge bench will occupy the field. Basically, the fourth option, which was considered to be one of the options before the governor, which is to wait unendingly, make everybody wait unendingly, make the constitutional process wait unendingly, that bills may not become act if the governor decides to wait. That option is no longer there. That's the takeaway from this judgment according to me. As of today, in Chandigarh, Punjab Minister Sanjay Arora addressed concerns about the rising crime rate in the state. He remarked that news which should not be highlighted often receives attention, while positive developments get less coverage and negative reports dominate public perception. It was mentioned that investors and conveyed to him that Punjab's law and order situation was better compared to many other states. The minister acknowledged that improvements were still required, but emphasized that the police were treating these matters seriously and appropriate action was being taken. Observers noted that his statement aimed to reassure both citizens and investors about the government's commitment to maintaining safety and strengthening law and order. मैं कह रजिंदर जी ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ ਪੇਪਰ ਮਿਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ IT ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਰੈਡੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ 2 ਬਰਨਾਲੇ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਬੁੱਧਨੀ ਹੈਗੀ ਬੁੱਧਨੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ That's all for now. Stay tuned to CVR English.